Hello everyone. ICS board quadratic equation, very important questions. I have already done 1 to 9 questions in last two videos. Now question number 10. Without solving the following quadratic equation, find the value of p for which the roots are equal. Equation is px square minus 4x plus 3 equal to 0 for equal roots d is equal to 0, b square minus 4ac is equal to 0, b is minus 4, a is p and c is 3 equal to 0, 16 minus 12p is equal to 0, minus 12p is equal to minus 16, minus cancel, p is equal to 16 upon 12, 4 3 the 4 4 the, p is equal to 4 by 3. This is the answer. Question number 11. Without solving the following quadratic equation, find the values of m for which the given quadratic equation has real and equal roots. Now equation is x square plus 2 m minus 1 x plus m plus 5 equal to 0. What are ABC? A is equal to 1, B is equal to 2, m minus 1 is a whole though, 2 m minus 2, and C is equal to m plus 5. A is coefficient of x square, B is coefficient of x, and C is constant term. Now for real and equal roots, D is equal to 0, b square minus 4 ac is equal to 0, and b is 2m minus 2, 2m minus 2 whole square minus 4 into a into c, m plus 5 equal to 0. Now a minus b whole square, a square mean 4m square plus b square mean 2 ka square 4 minus 2ab, 2 into 2m into 2 to the 4 to the 8m minus 4 1 the 4 and 4 into m 4m minus 4 into plus 5 minus 20, 4m square minus 12m plus 4 minus 20 minus 16 equal to 0. जब इक्वेशन के अंदर कॉमन आता है तो उसको लेना बहुत ज़रूरी है टू सिंपल इक्वेशन को सिंपल बनाने के लिए. तो 4 इज़ कॉमन, m स्केयर माइनस 3m माइनस 4 इक्वल टू 0. 4 को नीचे ले जाए 0 के, वी गेट m स्केयर माइनस 3m माइनस 4 इक्वल टू 0. फैक्टर करो, सिंपली मिडल टर्म स्प्लिटिंग करो इसको. 4 1 द 4, m स्केयर माइनस 4m प्लस m माइनस 4 इक्वल टू 0. m कॉमन, m माइनस 4 प्लस 1 कॉमन, m माइनस 4 इक्वल टू 0. नाउ m माइनस 4 कॉमन, m प्लस 1 इक्वल टू 0. दिस इज m minus 4 into m plus 1 equal to 0. Now either m minus 4 equal to 0 or m plus 1 equal to 0, we get m is equal to 4 and m is equal to minus 1. So the answer is m is equal to 4 comma minus 1. These are the values of m. This was question number 11. Now question number 12. Without solving the following quadratic equation, find the values of p for which the given equation has real and equal roots.
for real and equal roots, condition is D is equal to 0. Now equation x square plus p minus 3 into x plus p equal to 0 for real and equal roots, D is equal to 0. D is equal to 0. What is D? B square minus 4 AC is equal to 0. B की वैल्यू क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ x, दैट इज p minus 3 square 4 into a, कोएफिशिएंट of x square is 1 into c, that is p equal to 0. Now a minus b whole square, p square plus 9 minus 2ab mean minus 2 6p minus 4p is equal to 0. p square minus 10p plus 9 factorize, splitting middle term, 9 1 the 9, p square minus 9p minus p plus 9 equal to 0. p common, p minus 9, 1 common, minus 1 common, p minus 9, p minus 9, p minus 1 equal to 0. Now either p minus 9 equal to 0, p minus 9 0, p minus 1 equal to 0. So p is equal to 9 or p is equal to 1, p is equal to 9 comma 1. This is the answer. Now question number 13. I tried my best to solve different types of the equations. Now find the values of k for which x is equal to 3 is the solution of the quadratic equation. Very, very important question. Equation is k plus 2 x square minus kx plus 6 equal to 0. Find the value k for which x is equal to 3 is the solution. x is equal to 3 is the solution mean इसकी वैल्यू यहाँ डाल दो, तो ये आ जाएगा k plus 2, 3 का स्क्वायर 9 माइनस k इंटू 3 प्लस 6 इक्वल टू 0. 9k प्लस 18 माइनस 3k प्लस 6 इक्वल टू 0. 9k माइनस 3k 6k प्लस 24 इज इक्वल टू 0. 6k is equal to minus 24, k is equal to minus 4, k is equal to minus 4, this k is equal to minus 4. Now last में लिखा thus find the other root of the equation. x is equal to 3 is the solution. Quadratic equation के दो solution होते हैं, एक गिवन था, एक और फाइंड करना है. इट मीन्स इसकी वैल्यू डाल दो वापस इक्वेशन के अंदर, k की वैल्यू डालो -4, ये बन जाएगा -4 प्लस 2 एक्स स्क्वायर माइनस k की वैल्यू -4 x प्लस 6 इक्वल टू 0. -2 एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 4x प्लस 6 इक्वल टू 0. तो इसमें -2 कॉमन ले लो, -2 कॉमन एक्स स्क्वायर -2x माइनस 3 इक्वल टू 0. -2 को 0 के नीचे ले जाओ, एक्स स्क्वायर -2x माइनस 3 इक्वल 0. स्प्लिटिंग मिडिल टर्म 3 1 the 3, we get x square minus 3x plus 1x minus 3 equal to 0. x common, x minus 3 plus 1 common, x minus 3 equal to 0. We get x minus 3 x plus 1 equal to 0. Either x minus 3 is equal to 0 or x plus 1 is equal to 0. X is equal to -1, x is equal to 3. So this was given, x equal to 3 a solution. Now find the other root, mean -1 is the other root. This is very, very important question. X is equal to -1 is the
is the other root, is the other root. This is the answer. Now question number 14. Now find the value of k for which the following equation has equal roots: x square plus 4x kx plus k square minus k plus 2 equal to 0. For equal roots, d is equal to 0, b square minus 4ac is equal to 0, b की वैल्यू 4k होल स्केयर माइनस 4 इंटू 1 इंटू c की वैल्यू है k स्केयर माइनस k प्लस 2 इक्वल टू 0. ओपन द ब्रैकेट, 16k स्केयर माइनस 4 इंटू k स्केयर माइनस 4 इंटू माइनस k यानी प्लस 4k माइनस 4 इंटू प्लस 2 माइनस 8 इक्वल टू 0. दिस बिकम्स 12k स्केयर प्लस 4k माइनस 8 0. 4 कॉमन, 3k स्केयर प्लस k माइनस 2 इक्वल टू 0. 4 0 के नीचे चला जाएगा. 3k स्केयर प्लस k माइनस 2 0. इसके बनाओ स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, 3 टू द 6 तो 3 टू द 6. इसके फैक्टर बनेंगे 3 टू द 6. 3k स्केयर प्लस 3k माइनस 2k माइनस 2 इक्वल टू 0. 3k कॉमन, k प्लस 1 माइनस 2 कॉमन, k प्लस 1 इक्वल टू 0. k प्लस 1 इंटू 3k माइनस 2 इज इक्वल टू 0. k प्लस 1 इज इक्वल टू 0. 3k माइनस 2 इज इक्वल टू 0. k इज इक्वल टू माइनस 1, 3k इज इक्वल टू k इज इक्वल टू 2/3. तो k के दो आंसर आ गए, k इज इक्वल टू माइनस 1 कॉमा 2/3. दीज आर द टू आंसर वैल्यूज ऑफ k. नाउ दिस वाज video number 3, question number 10 to 14. That's it. If you like this video, please follow me and subscribe my YouTube channel for more videos. Thanks for watching the videos.